करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 22 फरवरी है। आइए देखते हैं क्या है ऑन दिस डिफरेंट करेंसी पेयर्स। डॉलर इंडेक्स कल काफी साइड टू वे मूवमेंट था एंड ऑलरेडी इट इज इन sideways choppy movement. Volatility is expected to continue here, means expected to behave in between 95.50 60 on the lower side and the 97.00 on the higher side. It has to give a clear direction. Till that time, volatility is expected on both the two sides. Dollar rupee कल हमने another sell off दिखा है, which is at it traded in between 74.71 on the higher side and 74.36 on the lower side, and finally closed at 74.49. Here also this basically is some sort of supports seen around 74.35 say 74.40 levels. So we need to be ready for another choppy volatile movement in this particular currency pair in today as well as in the coming days. GBP dollar yesterday traded in between 1.3638 on the higher side and 1.3583 on the lower side. Here also it is unable to break out of this range, that is 1.3650 on the higher side and 1.3475 on the lower side. Till the time, choppy, sideways, volatile two-way movements are going to continue in the market. In euro dollar, we saw some sort of rejections at the higher level. It traded in between 1.1390 on the higher side and 1.1306 on the lower side. Similar type of things are there. That 1.1220 say 40 in between that one on the lower side and 1.1400 से 1.1420 के बीच में ही हिचकोले खाने की पूर्ण संभावना है इन आने वाले दिन में. Intraday probable supports at 1.1280 से 90, then 1.1240 से 50 and 1.1210 से 20. Whereas the resistances are at 1.1345 से 55, second resistance at 1.1375 से 85 and the third resistance at 1.1410 से 20. डॉलर येन अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे भी कल एक सेल ऑफ दिखा गया. It traded in between 115.12 on the higher side and 114.71 on the lower side. अभी हालांकि थोड़ा सा सेल अपटिक्स एज ऑफ नाउ दिख रहा है, बट डॉलर इंडेक्स इज नॉट गिविंग एनी particular direction. That being the case, here also we can expect two-way volatile movements here. अगर इंट्राडे पर्पस में हम देखेंगे, द प्रोबेबल सपोर्ट्स, फर्स्ट सपोर्ट एट 114.45 से 55, सेकंड सपोर्ट एट 114.25 से 35 and the third support is at 114.00 से 15. As the resistances are concerned, first resistance at 114.85 से 95, second resistance at 115.10 से 20 and the third resistance at 115.30 से 40. डॉलर कैंडी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस हुआ है एंड स्टिल इट इज विद इन दैट पर्टिकुलर रेंज. यहाँ से यहाँ के बीच में yesterday it traded in between 1.2760 से 1.2721 in between that one, and अभी के लिए it is trying to break above that particular the resistance zone, but we need to see because ये जो areas है that is 1.2780 से 1.2800 यहाँ पे काफी प्राइस रिजेक्शंस होने की ऑलरेडी हो चुका है, तो आने वाले दिन में भी काफी रिजेक्शंस होने की संभावना है. इंट्राडे supports and resistances, first support at 1.2720 से 30, second support at 1.2680 से 90 and third support is at 1.2650 से 60. As the resistances are concerned, first resistance is at 1.2775 से 85,
second resistance at 1.2810 से 20 and third resistance at 1.32840 से 50 के बीच में। ऑसी डॉलर ये भी एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। मीन्स बड़ा वाला रेंज देखेंगे तो 0.6990 on the lower side and 0.7315 से 25 on the higher side, इस रेंज में ही फंसा हुआ है। It has to clear this particular range to give a particular directions. Yesterday it traded in between 0.7222 on the higher side and 0.7166 on the lower side. So and the probability is there that it might face some sort of rejections for intraday purpose 0.7250 से 0.7280 के बीच में। intraday supports and resistances, first support at 0.716575, second support at 0.713545 and third support is at 0.7105 से 7115 के बीच में। और is the resistances, first resistance at 0.7215 से 25, second resistance is at 0.7250 से 60 and third resistance is 0.7275 से 85 के बीच में। CNH देखेंगे कि ये जो रिसेंट स्विंग लोज है यहाँ पे कल टच डाउन किया था, लेकिन आज मॉर्निंग में थोड़ा सा हल्का सा बाइंग दिख रहा है। We don't know whether it is some sort of state run in interventions from the Chinese authorities or not. We need to check in that particular case. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आज अगर some sort of इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल बन जाता है which closes inside this particular box, then there are higher chances that the incoming days it will be heading towards 6.4150 के तरफ with a initial resistance around 6.3850 से 6.3870 के as the means important first resistance area. ब्रेंट ऑयल हम देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये सस्टेन कर नहीं पा रहा है एंड अगेन ये हाई को छूने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ tensions are there, a lot of news flows are coming in from the market and recently just early morning में देखा गया है कि पुतिन का certain aggressive comments are there because of which Brent oil now at 96.26. Yesterday it traded in between 95.16 on the higher side and 92.14 on the lower side. So जब तक ये news flows बंद नहीं होते हैं तब तक के ये टू वे साइडवेज चॉपी मूवमेंट्स आर एक्सपेक्टेड ऑन ब्रेंट ऑयल। ये जो 10 ईयर ट्रेजरी है ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे आ चुका है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये स्विंग लो को देख के स्विंग लो के नीचे अगर क्लोज देता है, यानी ये स्विंग लो के नीचे ये ऑलरेडी क्लोज दे चुका है, अभी के लिए एक अपटिक देखना है। दैट अपटिक शुड नॉट क्लोज द दिस पार्ट मींस जो स्विंग हाई अभी यहाँ के बाद जो बनाने वाला है समथिंग लाइक दिस, ये जो स्विंग हाई होगा इट शुड नॉट ब्रेक दिस पर्टिकुलर स्विंग हाई एंड देयर आफ्टर फिर अगर नीचे आ जाएगा एंड ये जो लो है इसको ब्रेक करेगा देन द अप ट्रेंड विल बी मीन्स हॉल्टेड फॉर टाइम बिंग। लेकिन सो आने वाले कुछ दिनों में हमको प्राइस एक्शंस देखना है। अभी ये यहाँ पे आया है, ये वाला लेग है जो प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ के नीचे आया है। अभी हमें इस टाइप का एक अपवर्ड स्विंग देखना है एंड देन अगेन ब्रेकिंग द लो एंड दिस पर्टिकुलर स्विंग शुड नॉट ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर द ऑल टाइम द रिसेंट स्विंग हाई दैट इज दिस। सो इन सच a scenario the upward movement will halt। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली यहाँ पे 16 फरवरी एंड 17 फरवरी में प्राइस एक्शन से लग रहा था कि अपवर्ड साइड में ज़्यादा सस्टेन कर नहीं करना चाहिए, जो हमने अपने वीडियोस में
उस 16 तारीख एंड 17 तारीख के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, तो वैसा ही प्राइस एक्शंस दिखने लगा है। अभी आने वाले दिन में देखते हैं हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव। ये क्या स्ट्रेट ये पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को टेस्ट करता है? दिस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन दैट इज 1.7050 से 1.7450, ये जो 300 बेसिस पॉइंट्स का जो ये है, यहाँ पे डायरेक्टली हिट करता है या दिस टाइप ऑफ मूवमेंट देता है, ये आने वाले दिन में हमें देखना है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।